So, good afternoon to everyone. Today in the lab, we will see the two programs. One is the binary search and another one is the linear search. So the binary search we have discussed in the class that how the binary search works. So in binary search, what we take an sorted array, and in this sorted array, there will be a low and high will be present, and there from the middle, what from there will be a mid value. So mid equal to low plus high by 2. So from there we will what we will find the mid value. So if the element which we are searching that is present on the this value is less than mid, then the left side of the mid, the list left side will be checked, and if the value that is greater than equal to mid, we are searching the particular value which is greater than mid, then it will be present in the what? Then it will be present in the right side of the list. So that's how we perform them, and after that, one time we will get the result. But if low is greater than equal to high, if searching the condition, there are some present that if low is greater than equal to high, in that case, what we will see that if low greater than equal to high, that means what? That means the value is not present in the list. That's how the binary search works, which I have discussed in the class. So now we will see what how binary search through the program, how we can do this. So now for doing the binary search program, first what we should have to declare, we should have to declare an array. You can see, because we have to take a array. If we didn't take the array, then we cannot perform the binary search operation. And one thing you should have in the mind, that the array which you will take, the value, whenever the value will be put, you have to put the value as a sorted order, because binary search works on that particular array which will be in the sorted order. Otherwise, the binary search operations cannot be performed. So first, what we have to take, we have to take an array. So I have declared that the size of the array is 100. Next, here search, this is the key element, the key element which I will search in the array, the key element which I will search in the array. And what will be present there? There will be low, but here I have used as the first the low value, the low value which they are present, I have used it as the first, and the high value, high value is presented as the last. So there will be low and high, these two will be present. So this variable has been declared, and there will be a middle value also present. So that's why I have declared the middle value. And what? The n, this is the number of elements present in the array, and this is the loop condition. For loop condition, we will use this. So first, what we'll have to do here, first I have used printf, enter the number of elements, and through scanf, means as a user input, we will take the number of elements. We will take the number of elements that we want to use in our array. The number of elements that should be present in the array, we are taking that as the from user input. So after that, we have to declare the array, because we have to use the array, because one by one the input will be taken in the array. So that's why what we have used, a for loop is used, a for loop is used. So for c equal to 0, c less than n, c plus plus, that means the size of the array is n, and we are taking one by one input. Okay, so from in the array we are taking one by one input. After that, which I have used, that printf enter the value to find. That means the element which we want to search, this element should also be taken from the user. So that's why printf enter the value to find, and then we use scanf, scanf, and the value which we will take as an input and which we will search in the array. So these are taken. After that,
always we have declared that first equal to 0. Now the low value at first when the searching will start, then in where the low value will be present? The low value will be present in the 0 index, because the first time when the searching will start, the low will be in the first position of the array. So that's why we declared first equal to 0. And what will be the last? We know that if the array start from 0, so the last element will be on n-1 position. So that's why we declared last equal to n-1. After that, our low and high both are declared. That low will be present on the array index 0 position, and the high will be present at the array index n-1 position. Then after that, what we perform? We take the mid value. After that, what we perform? We perform the mid value. So after that, we use middle equal to first plus last by 2. That means we are finding the mid value. So we find the mid value. Then the conditions will be checked. What are the conditions will be checked? That there are two conditions. If the low value is greater than high, that means there will no checking will be possible. Okay, because if the low value is greater than high, then no checking will be possible. But if low value is less than high, then the checking will be possible. That's why you use first while equal to first less than last. Less than equal to first, we have used less than equal to last. Here you can see first less than equal to last. That means the checking will be start. Now there are three conditions. In this checking, there are three conditions. What are the condition? If we can say that if the array middle value, if the array mid value or the array middle value less than equal to search, means the searching value, the value we are searching, these are what? These are greater than equal to array mid. These are greater than equal to array mid. Then in the what? The right portion of the array mid, means the right side of the list will be searched. In that case, we have shown that low equal to mid plus 1. So we move the low to next of the middle plus 1, that is mid plus 1. So it will move to the first equal to mid plus 1. If the value that we are searching is greater than equal to array mid, then our low value will be moved to mid plus 1. High value will be as same as is, but the list we will search on what list? The right portion of the list of the array mid. So that's why low will move to the middle mid plus 1. So here in case of low, we are using fast. So fast equal to, and in case of mid, we are using middle. So that's it. First equal to middle plus 1. What will be the next condition? Another condition there maybe arises that the value we are searching already present in the mid, means the mid, in the mid the value is already present. Then what? Then already we will do what? We will return that value. What? The value that we are getting is already present on the mid. Then no operations we have to do. Only we will what? We will locations, the searching value will be present and the locations will be given. These are the another condition. And there may be another condition that the value that we are searching is less than equal to array mid. Less than equal to array mid, then the value searching key or the searching value which we are searching, it will be present on the left side of the list. It will be present on the left side of the list. That means what? That means we will move the high value to mid minus 1. That's why you can see last equal to middle plus 1. And we will perform this operations, we will perform the mid value again. So if we draw some it, that if we draw the value, sorry, so it will be clear when I run the program.
And now the another condition is what? If the low value is greater than high, what I am saying, that if low value is greater than high, then that means the value is not present in the list. So if we execute the program, then you can see, if we execute this, so number of elements, we want that in our array, the number of elements should be like 7 elements should be present in our list. So in our array, there will be 7 elements present. So we have to put the elements one by one. You have to take the elements. So first, in case I have taken 12, then 45, then 67, then 89, then 102, 104, and 111. So here you can see all the values I have taken are in the sorted order. First 12, then 45, then 67, then 89. सर आउटपुट स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. आउटपुट स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. Yes, sir. Okay. Okay. 1 minute. Please wait some minute. There is a problem. इसको मिनिमाइज करेंगे तो शो करेगा नीचे. Now it is showing, I think. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now first what we have to take, the array we have to take. So we want in our array, there will be 7 elements present. We are taking 7 elements. So that's why I entered the 7 elements. Now we have to take the 7 elements in our array one by one. So during taking the elements, you have to remind one thing, that the element should be in the sorted order. Otherwise, the binary search cannot work. So we will taking that first value 12, then 16, then 76, then 89, then 95, and now you see all the elements I have taken, all the 7 elements I have taken, and these elements are, you see that these elements are in the sorted order. So after that, what we have to do, we are searching. The searching value we want to here, that's why you are showing that enter the value to find, means the value which we want to search. So we want to search 89. We want to search 89. Now you see the 89, the value we are searching 89 found out location 4, because 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4. So in this position, that's why you can see here I am using middle plus 1. That means it will be shown as, the value will be shown as like this, 1, 2, 3, 4. So in the fourth position, the value is shown. So what it will be performed? So 89,
89 means what? 89 is present in the our location. If we take this, so our middle value, what will be the middle value? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the middle value, what? The first it will point to the 12. The first value will point to the 12. 12 location, that means 0. And the last location, 102. This two first low and high will point in that location. Then after that, what? Then after that, the middle value, we get the middle value. After the middle value, the element we are searching is the greater than equal to middle value. So in the right portion of the list, the value will be searched. And after that, we will get this value. Okay. So that's how what I have shown in the binary search example in the class. That's like that it works like this, that first low and high, the value will get, and after that the middle value will be found, that low plus high by 2. Then the middle value is found. We will search that the value is present on the middle value or not. If the value is not present on the middle value, then what we have to do? We have to search that the value which we are searching is less than middle or greater than middle value. If it is less than middle value, then the left side list of the middle value will be searched. And if the value that is present is greater than equal to mid value, then the right side list will be searched. And if the left side list will be searched, then we will move our high value to mid minus 1. Or if our right side list will be checked, then we will move low value to mid plus 1. Okay, so then the list will be, our list will become small, and again we will perform this operation and get the middle value, and from then we will check that the value will be less than or greater than equal to middle value. So that's how this process will goes on. And after that, one time we get that in a position that the low and high and mid all are same. Then that time we can say that only one element are present in the list now. Our searching, after searching so many lists, after searching so many list elements, there after we get in the position, the required position we want, in that position already low, high and mid, all values will be what? All values will point into that location. So our value, our desired value will get in that location. Okay, it is the process of the divide and conquer. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, So just here given last equal to middle minus 1. Kindly explain this. the last middle minus 1. Bolo. Yes. हम्म Then ये तो हम लोग what's का the condition is this, sir? बेसिकली देखो, बेसिकली क्या है, हम लोग तो तीनों Kindly कंडीशन चेक explain it. करते हैं. Yes, sir. बोलो. So last equal to middle minus 1. Sir, तो इसका मीनिंग समझाया सर. नहीं, ये वाला देखो, ये हम लोग क्या है, नॉर्मली हम लोग तीनों कंडीशन चेक करते हैं. तीनों कंडीशन क्या है कि हम जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू मेरा मीट में प्रेजेंट है क्या नहीं. अगर मीट में मेरा प्रेजेंट हो गया तो क्या है, हम डायरेक्टली मीट को क्या है, मीट का लोकेशन बोल देंगे और एलिमेंट प्रेजेंट है बोल देंगे. मेरा सर्चिंग का कोई जरूरत उतना नहीं है. बट अगर वो वैल्यू मिडिल में प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो कौन सा पोजीशन में है. वो जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो मिडिल पोजीशन में जो वैल्यू है उससे छोटा है या उससे बड़ा है. ये दो कंडीशन चेक करते हैं. अगर उससे बड़ा रहेगा तब क्या है, राइट साइड ऑफ द लिस्ट वो चेकिंग करेगा. अगर जो वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं वो अगर लेस देन होगा तो वो क्या होगा, वो मिडिल का लेफ्ट साइड का लिस्ट जो है उसमें चेकिंग करेगा. अब उसमें चेकिंग करने से क्या है कि हम लोग
मूव कर रहे हैं, जब लेफ्ट साइड ऑफ द पोजीशन में चेक करेगा तो हम लोग क्या है, मेरा हाई तो उस टाइप जगह पोजीशन में है। अगर तुमको अगर क्लियर होगा, हम इसको दिखाते हैं। One minute. देखो इसमें क्या था हम लोगों का कि अब जो वैल्यू हम चेक करते हैं, ठीक है, वैल्यू जब चेक करते थे कि इस पोजीशन में टोटल जैसे लिस्ट है मेरा, तो लिस्ट में हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट लो एंड देन हाई, ये दो पोजीशन हम लोग ले लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको हम लो मानते हैं और लास्ट पोजीशन जो है उसको हम हाई मानते हैं एट फर्स्ट जब हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं। सो इन दैट पोजीशन द लो विल बी फर्स्ट पोजीशन एंड द हाई विल बी in the last position. So here we are searching the value 42. Okay, so सर इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं होगा वहाँ पे? नहीं, तुम कर सकते हो, हम नहीं किए ऐसे कोई ये नहीं है, ये तुम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये कोई रूल ऐसे ये नहीं है कि तुम जो भी यूज कर सकते हो। हम इधर 1 से किए, ऐसे कोई नहीं है, इधर इंडेक्स हम तुम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 0 से होगा तो उधर 14 होगा, और इधर हम 1 यूज किए इसलिए 15 हुआ। ठीक है, तो टोटल है 15 एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा। अब नाउ our low value will be what? In the low value will be point to the first location and the high value will point to the last location. So how we get the middle value? That low value is on the index 1 and high value is on the index 15. So what will be the mid value? 1 plus 15 by 2. That means 16 by 2 equal to 8. So our mid value is what? This is the mid value. But in the mid value, in the 8 index, the mid value is pointing, and in this the value present is 29, but we want to search the value that is 42. Then what we will do, we will search in this location because the array is sorted order, and we know that all the values present in the left side of this array mid will be low than mid value, and all the value that are present on the right side of the list will be what, will be greater than of the array mid. So हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लेफ्ट साइड को छोड़ देंगे, लेफ्ट साइड को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते ही है कि उसमें जो वैल्यू प्रेजेंट होगा वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू सब लेस देन होगा, एरे में जो वैल्यू है उससे सब लेस देन वैल्यू प्रेजेंट होगा लेफ्ट साइड में, और जो मेरा राइट साइड में वैल्यू प्रेजेंट होगा वो सब वैल्यू क्या है, सब वैल्यू मेरा ग्रेटर देन रहेगा मिड वैल्यू से। तो हम लोग क्या है, हम लोग को तो ये लिस्ट सर्च करने का कोई लेफ्ट साइड का लिस्ट सर्च करके कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग क्या करेंगे, जो लो वैल्यू अब 1 पोजीशन में पॉइंट कर रहे थे उसको हम लोग क्या है मिड प्लस 1 करके लेके आएंगे, क्योंकि मुझे क्या है इस साइड का लिस्ट चेक करना है। तो इसीलिए देखो इस पोजीशन से हम क्या किए, मिड प्लस 1। दैट्स व्हाई इन द सेकंड इटरेशन व्हाट, in the second iteration the low value is moved to 9, that is mid plus 1, and high value is as it is, so that's why here 15. So 9 plus 15, our mid value, next time the mid value will become 12. Now we are didn't concerned about this side list, we are only concerned into this list, only from 9 to 15 we are considering on into this list. So 9 15, our mid value will become 12. So in the 12 position, what, in the 12 will be the mid value. So now in the 12 position, what the value is present, the value is present 47. So what, 42 is greater than 47, less than 47, less than 47. So that means what, all the values that present on the right side we have do not access that, because all the value in the right side it will be greater than. So we have to concern over this, only this list. So that's why we have what we have to do, we have to move high equal to mid minus 1.
So that's why in the next time you can see high is moved to the, it is the mid, and next time I move to the high into this position. So here now you can see low is 9 and high is moved into mid -1. So it is now to 11. So 9 plus 11, 10. So now what? Our list is only in 3 elements. We will search only on these 3 elements, 9, 10, and 11, because we already find out that all, if the value will be found in this list, will be present in these 3 elements also only. Otherwise, there will be no value will be present in the list. So now you can see what 9 plus 11 by 2, that means 10. So our middle value now in the third iteration become 10. So the value that we are searching, this is the mid value. No, in the mid value, the value is present 36, but we are searching 42. So we have to again iterate it. Now 42 will be present on what side? 42 is the greater than of array mid. So that means the right portion, the value will be present in the right portion. So in that case, what we have to do? We have to move our low to mid +1. Now low to mid +1 means it will point low and high. Both will be point to the same location. That means 11. So low 11, high 11. The mid value will become what? The mid value will become 11. So now the mid value, are the element we are searching matched with the mid value? Yes, because now the 42, we are matching with this 42 and these are matched. So we can say that like divide and conquer, like if you remember divide and conquer, what? In divide and conquer approach, what we have performed, or the algorithm we have seen, that if the list is big, if the list is, or we can say if our problem is small, then the problem is reduced and it is divided into parts. After dividing into parts, we each solution of these sub problems, and then we combine the problems to get the solution of the original problem. So here also first we have, in the when the searching began, in our list 15 elements are present. After that, what we do? After that, you can see only we are concerned about this list. So in that time, in this list, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Only 7 elements are present. After that, we again perform the binary operations, binary search operations. And that time, what we found, that the mid value is in this position. So our list will become here. And after that, we again perform. So after performing the binary search operation constantly, there one time we will get that it low, high, and mid, it will point in the same location. Then if it is point in the same location, then we can say that the value which we are searching, we find out. Okay. Yes, sir. Are we clear? Hua? Yes, sir. Okay. So I will say run this program. किसके पास सिस्टम है? जिसके पास सिस्टम है, तानिया तुम्हारे पास सिस्टम थे तो, और आदित्य तुम्हारे पास भी तो है. अभी रन करना है. तुम्हारे पास है हाँ सर. तो इसको रन करो, और कोई एरर आएगा तो मुझे बताओ, ठीक है? इसको एक बार रन करो, इस प्रोग्राम को. So anyone has any query about that? Siaram, Rehan? No, sir. रन कर सकते हो? Sir, program, sir. प्रोग्राम है ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम Sir, जो समझाए. program.
हाँ, बोलो। ट्राई कर। सर रन हो रहा है। तुम लोगों का जिसके पास सिस्टम है, ठीक है, जिसके पास सिस्टम है ये प्रोग्राम ट्राई करो रन करने, ठीक है, जिसके पास सिस्टम अवेलेबल है, जिसके जिसके पास सर रन किए सर रन हो गया। रन हो गया। इतना हाँ जल्दी सर, कैसे आप कर मतलब लिए जब तुम? बना रहे थे ना, सर आप अच्छा जब अच्छा बना अच्छा, रहे थे ना तब हम लिखते भी जा रहे थे। अब मगर रन तो किए, समझ में आया तो क्या है, क्या हो रहा हाँ है? सर। हाँ सर। ठीक है। और बाकी लोग का? अच्छा, तुम लोगों को एक इंफॉर्मेशन हम दे दे, जो चीज है कि शायद अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं, ठीक है, मगर हो सकते हैं कि तुम लोगों को नोटिस मिल जाएगा मंडे या ट्यूसडे, ये कोई भी दिन में तुम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम तुम लोगों का जो थर्ड सेम का प्रैक्टिकल एग्जाम वो हो सकते हैं कोई कोई भी दिन में, 24 या 25, ठीक है, अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है हम लोगों के पास, मगर उस दिन तुम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकते हैं। और प्रैक्टिकल में तुम लोगों का सब्जेक्ट जो दो सब्जेक्ट है, एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इनका वाइवा हो सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, क्योंकि तुम लोगों का ये दो ही तो प्रैक्टिकल था, और सीएससी का और ईसी, तुम लोगों का ईसी में सब्जेक्ट में कुछ था, ईसी का सब्जेक्ट या कोई दूसरे प्रैक्टिकल? डिजिटल था इसी का। डिजिटल था, और क्या क्या प्रैक्टिकल था तुम लोगों का? सब प्रैक्टिकली शायद उस दिन होगा, ठीक है, तो अभी तक कुछ हम लोगों के पास मतलब इंफॉर्मेशन नहीं आया है, मगर जितना है कि हो सकते हैं, अब टोटली हम कंफर्म करके नहीं बोल दे पा रहे क्योंकि नोटिस अभी तक कुछ नहीं आया है, बट प्रिपेयर रहना कि मंडे या ट्यूसडे इस टाइम में तुम लोगों का प्रैक्टिकल जो है थर्ड सेम का जो प्रैक्टिकल, उसका एक्सटर्नल एग्जाम हो सकते हैं, ओके। सर जो भी लैब सब्जेक्ट थे उसका ना। जो भी लैब सब्जेक्ट है उसका ही प्रैक्टिकल एग्जाम, तो जो भी लैब सब्जेक्ट है उसका सर वाइवा ही होगा। कम्युनिकेशन स्किल का भी लैब था तो उसका भी होगा। उसका भी होगा, उसका भी होगा था। अब कौन सा डेट, मतलब अभी तक देखो ये 2 दिन के अंदर कोई भी दिन हो सकते हैं, और मतलब रूटीन भी तुम लोगों को दिया जाएगा, रूटीन भी दिया तो जाएगा सारा कि प्रैक्टिकल एक ही दिन होगा। सारा प्रैक्टिकल शायद, मतलब अभी तक कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ बोला गया है कि थर्ड सेम का और फिफ्थ सेम का एक दिन ऐसे डेट दिया है, मगर कोई अभी तक ऑफिशियली बोला नहीं गया है कि कौन सा दिन में किस लैब होगा, क्या होगा। शायद ये भी हो सकते हैं कि एक दिन में पूरा लैब होगा, ये भी हो सकते हैं। वाइवा है बेसिकली, तो वाइवा होगा तुम लोगों का, मेनली प्रैक्टिकली रन करके कुछ दिखाना नहीं होगा बेसिकली, जो अगर होगा तो ये 24 या 25, ठीक है, नोटिस मिल सेकेंड जाएगा अगर जब सेमेस्टर का होगा भी तो सर कल प्रैक्टिकल परसों। एक ही दिन हुआ था सारा हम लोग का। हम्म सेकेंड सेमेस्टर का भी तो सर ऐसे ही ना हुआ था एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, तो उसमें भी सर सुबह से लेकर 5 बजे तक कंप्लीट कर दिया था एक ही दिन में लेकर। तो ऐसे ही होगा, मगर डेट अभी तक फिक्स नहीं किया है। मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा, जब अगर होगा तो नोटिस मिल जाएगा, बट हम पहले से बोल दे रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना उसका तैयारी भी तो करना है, तो इसीलिए थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना, जो पिछले ये है उसका पढ़ाई करके स्टार्ट कर देना, क्योंकि वाइवा में बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस ही पूछ जाता है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस के बारे में ही पूछा जाएगा, तो इसीलिए क्या है कि जो तुम्हारा लैब का जो सब्जेक्ट्स है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना, सर ठीक है। एक्सटर्नल लोग आएंगे वाइवा लेने के लिए। हाँ, एक्सटर्नल मतलब दूसरे कोई टीचर वाइवा लेगा, हम लोग प्रेजेंट शायद रहेंगे, बट वाइवा लेगा कोई दूसरे पर्सन। ओके सर। तो किसी का कोई और प्रॉब्लम है?
आदित्य तुम्हारा रन हो गया? यस सर। ओके। सर हाँ ये प्रोग्राम मोबाइल पे रन हो सकता है, पॉसिबल है सर? तो मोबाइल में ऑनलाइन ऑनलाइन कॉम्पाइलर बोल के एक ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑनलाइन कॉम्पाइलर में जाके तुम अगर उसको क्या है कि ऑनलाइन ही तुम प्रोग्राम रन कर सकते हो। तुम वही उस ऑनलाइन कॉम्पाइलर में क्या है, जो भी तुम चूज कर सकते हो। उसमें सी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, C++ भी कर सकते हो। एट ए टाइम तुम जो उसको चूज करके उसके प्रोग्राम रन कर सकते हो। ये ऑनलाइन कॉम्पाइलर होता है। तुम सर्च करना गूगल में, देखोगे ऑनलाइन कॉम्पाइलर बोल के सर्च करना, तो देखोगे ऑनलाइन कॉम्पाइलर सर्च करने से उसका एक ऐसे विंडो खोल जाता है। तो ऊपर में